हाय गाइस, वेलकम टू फाइनेंस करियर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम अपने एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में कंप्लाइंस के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। सो इफ यू आर विलिंग टू नो अबाउट कंप्लाइंस, व्हाट कंप्लाइंस गाइस डू, क्या होता है इस डिपार्टमेंट में, किस किस टाइप के लोग काम करते हैं, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होता है, क्या करियर प्रोग्रेशन के चांसेस हैं, एंड ऑल एवरीथिंग वी विल ट्राई टू आस्क ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आवर गेस्ट टुडे. So let me introduce you to our guest. I have with me Subha Mohan Selva Shankar. He is one of my good friend, and we were colleague in our past forms. So welcome Subha, welcome to this podcast. And first of all, thank you for accepting the invitation and joining this podcast. Thank you. And I just want you to introduce yourself to our audience. Subha, over to you. Yes. Hi friends, thank you for inviting. So I'm Subhamon Selva Shankar. What's my background is I am mostly into compliance and legal law. Okay. So I did my UG in law, BLLB honors from a private university of Chennai, and then I did my practice that is litigation there for almost 1 year and 4 months. Then I chose LLM Masters from NISM, which is degrees awarded by Maharashtra National University, Mumbai. And post that, I got placed in Abacus. Then from legal, my entire career, changed to compliance. And Abacus has given me good exposure on, legal and compliance roles, and also even risks too. So we had a very good exposure in 1 year, like working almost more than 12 hours every day, kind of, we're trying to involve and work with other team members and teams so that we get the exposure from them, like what is happening in this entire process of AIF or PMS and Okay. even on RI. Suppose that I got a role in New Delhi for a compliance officer roles in CCV Investment Managers LLP. So yes, then I chose that, and I'm here for almost more than a year. I'm currently looking after, all organizational compliance, regulatory compliances, and anything else I can add value to the organization that we are doing, and we are growing good. Yes. Okay. Great, great, Shobha. Thanks for the warm and long introduction. Okay, so you have said that you have done LLB and then LLM Masters from NISM, no? Then you Yes. worked somewhere and you're working in currently in Delhi in the capacity of compliance officer. So Yes. tell us what actually compliance is. If I want to understand what does compliance word mean in finance industry. So just start from basics and then build to the advanced levels. Now, so we are very beginners. We are trying to understand from a 0 to 1 perspective. Now, Okay. I yeah. understand. So compliance का role क्या है? So I'll tell you, in finance industry, like lot many people do daily trades and they take advantage of the market. वहाँ 100 लोग एक स्टॉक कर रहे हैं तो यहाँ 100 लोग एक स्टॉक बेचते हैं या तो दे इसके ऊपर lot many scams and other things has happened. तो फिर what government has thought is to make this compliant. Compliance मतलब कुछ नहीं है. They'll make multiple regulations on what and all possibilities one can manipulate the market or take advantage of the market. It should be a pure investment game, but rather than that, it shouldn't be a only money making game, through tricky and rookie moves. So that is the actual idea behind compliance, and they'll make set of rules, regulations, and by time to time we will like receive circulars. We should ensure that we are following that so that ये जो गलत हो रहा है वो नहीं हो रहा है हमारे साथ. तो ये Okay. एक इंडस्ट्री has failed, ये company has failed in some part, so they'll bring another circular stating you should cover this as well. So we'll comply with that circular, we'll do what they say, and our company is protected from that failure. So that Okay. is that is simple about more simple about compliance. ओके ओके. सो मैं Okay. थोड़ा सा और बेसिक करता हूँ इसको, थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन करने की Fine कोशिश करता tune. हूँ. व्हाट Okay, fine. सुबह सेड ना. सो कंप्लायंस इज लाइक, देखो, द फाइनेंस इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमी. सो व्हेन people or businesses, they want to raise money to expand their business and to do some other stuff,
they come to the market to raise money. If the financial system is not sound and people are just taking unfair advantage of the system, so people don't trust, so people won't trust the system. So government thought ki, oh, why not make a level playing field for everyone, and to prevent people from taking unfair advantages and other things, they have made these thing compliance thing, like they have set certain rules and other things. So am I right, Subha? You are right. Yeah, great. So, okay, so we understood the basic compliance, what it is all about and what it is needed. So these two questions are answered. Okay, now move on to the next step. Next step is, okay, someone is running an AMC, or someone is working in a fund house or finance industry. Let's say finance industry. So there is a compliance department. What these guys do? क्या करते हैं आखिर ये लोग? So You as I knows better said, than anyone. so as I said, हम ये करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं. रेगुलेटरी कंप्लायंस जो मैं बोला पहले, to protect the market or not to get destroyed as it. So similarly, organizational compliance होता है, where I need to do internal regulation checks, regulatory checks. ये Okay, टीम काम कर रहा है, ये टीम का ये डेटा सही है क्या नहीं, तो ये टैक्स का डेटा आ रहा है वो सही है क्या नहीं. So compliance is idea is actually 360 degree. okay, Whereas few organizations use it into, only for strictly into regulatory compliance. Few organizations use it to, add policies, and implementation happens by senior management. So compliance is not involved mostly. And SOPs, making of SOPs, which mostly not many organizations do, which I got exposed to, and I'm doing it currently in my new present organization. okay. So, So you yes. just said that compliance is like 360 degree. Mm. So they look after every aspect of the company. So in you talked about operational compliance and regulatory compliance. Okay, so Exactly. regulatory compliance is like, matlab, correct me if I am wrong, na? Regulatory compliance is like government has made certain rules and regulations, and you need to ensure as a compliance person that our firm or our company is adhering to these laws. First of all, it is clear, na? Regulatory compliance. Am I right? Yes, you Yes. are. Okay. So what about operational compliance? You just talked about operational compliance. So can you give me a So, bit more idea yeah, about yeah, that? yeah. I'll elaborate it. So, this operational compliance or organizational compliance is, so जो regulatory compliance आ रहा है, so it is mostly about filing reports or, वैसे kind of, where you will say Okay. government, I am following. Okay. But how we are implementing into ground level, Okay. inside my organization. So, government बोल रहा है कि you should add this tax as 15% LTCG. So, where I'll ensure my operations is adding only LTCG as 15%. Okay. So So according to the yeah, it's about the implementation at lower level tech. right. So you are saying that like operational compliance is internal policies and also what checks and Implementation. balances we have created to ensure the compliance with all the regulatory requirements and all. Exactly. So okay, Exactly. now these points are clear. So Every organization has a different shape, now. okay, So accordingly, we should have create our own SOPs according to the organization, which government will not say. Government will as say you take this baseline. उसके ऊपर हम काम करना है कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन सो दैट okay, रिजल्ट इज गुड. okay. So you are saying कि every firm makes their SOPs like standard operating procedures in their own terms so that it will be easy for them to implement on a firm-wide basis. Okay, got the point. Exactly. Got the point. Now you have made it clear, very clear. Thank you, Shobha, for that. Okay, so मतलब how many people are generally there in a compliance team? क्या size होता है? कितना रहता है मतलब? थोड़ा तो compliance team का बात करें तो. तो एक्चुअली ना तो कंप्लायंस टीम, आप कंप्लायंस टीम ले रहे हो अलग से, फिर उसमें तो दो तीन बंदे ठीक है, दैट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन अगेन. Okay, लाइक 500 crore तक 5 people are more enough including investment team to okay, take care of 500 crore का fund okay. or a PMS. So it's accordingly like if the organization is bigger, it need a big compliance team. If it is smaller, one person is more enough. Okay, got the point. Yes. It depends on like मतलब firm का business operations कितना wide है. So Exactly. उसके अकॉर्डिंग जितने
person needed है, मतलब as per that company hires that kind of people. Okay, Exactly. so compliance में if someone is looking to enter the industry, finance industry, and he wants to join compliance, so what should be the educational background and other things to Mhm. join compliance team? मतलब as per my understanding, I have seen some people like who were CS and all. So थोड़ा आप बताएं डिटेल में. So as you rightly said, compliance and company secretary CS goes together. So Okay, CS is the first preference, and the second comes the law, who mostly are observed by legal. But few companies has this hybrid thing where okay, compliance, risk, and legal it is known. So okay, there will be also legal to legal का काम comes only once in a blue moon. तो okay, सारे टाइम आप प्रॉब्लम को वेट नहीं कर सकते हो तो सो दैट लीगल कैन फिच इन. तो compliance, regular compliance work legal people can do, and CAs. okay. So Then CS, okay, CA, CS, CAs and legal team people. and law people. Okay, UGK or PG. okay, got the point. So सुबह जैसे और all the audience मतलब हमारे चैनल की जो भी audience है, so all people are somewhere working in the finance industry. So I just want you to help them understand how important compliance is in our industry. मतलब जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए compliance की क्या इंपॉर्टेंस है, और मतलब क्या रेड फ्लैग हो सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बताना, सो दैट दे अंडरस्टैंड वेदर दे आर मिसिंग समवेयर और दे नीड टू थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है ऑन कंप्लायंस पार्ट, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल. तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्यों है ना, you can be good to your family, but for the society also you should be good. So अगेन that can you come again please? I didn't got you. so so if you are working regularly and bringing food for your family every day, it's more good that you should also be privileged in a society. You should be have a good reputation. You shouldn't do any wrongs. You should be very good. It's similar to compliance is similar to that. Okay, Like you need to be a good boy in their house. Then you should follow compliance. okay, You want to be a bad guy. You don't want to follow compliance. But business comes along with the good guys, not in bad guys' hands. Why? okay, उसको पैसा दे रहा तो he'll take care. Bad guy who do non-compliance, SEBI has the power to charge anything, anything as penalty, okay, or disbar, debar the organization from the industry. So SEBI has did this in many orders or judgments they have passed on this. So ये चीजों में you should we should understand that being a good guy is always a good thing, and follow compliance. okay. So So you are saying कि, specifically I yeah, can't say that ये compliance देखना है आप, जो आपका compliance team बोल रहा है वो देखना ही है. okay. So you are saying कि first point I noticed that you said कि सेबी has all the powers, like क्या लिमिट है, क्या एक्सटेंशन है, मतलब कहाँ तक जा सकती है सेबी? No point ऐसे ना, limitless. लिमिटलेस. So they they they've can got. show it. हाँ, any disproportionate gain आप लिए उससे 3 times they can charge from you. Okay, three times. 3 times. So Okay, SEBI is something powerful organization which not general public knows. It is a very underrated organization बोल सकते हैं, underestimated बोल सकते हैं. But SEBI का power जो है, they can create laws, they can implement the laws. 3 powers आता है उनके साथ: legislative, okay, executive, judiciary. तीनों okay, बोलते हैं ना, ये तीनों पावर है SEBI के पास. okay. हाँ. They are जुडिशरी quasi पावर. judicial, quasi executive, quasi executive. They are entire quasi judicial, quasi executive. ओके. सो सोबा जस्ट टॉक्ड अबाउट सेबी. जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग बिगिनर है, मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ. सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं. सेबी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब सेबी को आप ऐसा समझ सकते हो जैसे पूरा उनके ऊपर पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई गलत काम ना हो, तो वो पूरा सुपरविजन करते हैं. और जैसे सुबह ने बताया, उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों पावर्स हैं. तो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ पावर. लाइक आप कुछ गलत करोगे तो दे कैन रिकवर 3 times मोर, जैसे सुबह ने बोला. मोर मतलब बहुत बहुत पावर है. तो हम लोग एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कंप्लाइंस को बहुत मतलब अटमोस्ट रखना, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री एक फेथ पे, ट्रस्ट पे काम करती है। कोई आपको अपनी लाइफ की हार्ड एंड मनी दे रहा है, पूरी उसकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। सो मतलब गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स वांट कि गुड पीपल शुड वर्क इन दिस इंडस्ट्री। सो इसलिए थोड़े रूल्स बनाए हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस है। अच्छा, जैसे अभी सुबह बात करते हैं, so जो लोग फर्म्स में काम करते हैं, तो अक्सर मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लाइक कंप्लाइंस को बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब मैंने देखा अपने आसपास ऐसे लोगों को, लाइक कंप्लाइंस को लाइक लाइक जस्ट हेडेक टास्क सा लेते हैं कहीं ना कहीं ना, कि यार ये फिर आ गए, ये फिर करवाना है इनको, ये हर बार ये फॉर्म फिल करके दो। तो यार अगर कोई पर्सन प्रॉपरली अच्छा कंप्लाइंस कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से वो लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और एक पर्सन जस्ट लाइक की टू डू, मतलब लाइक बोलते हैं ना कि इन नॉट इन स्पिरिट ओनली इन लेटर्स। सो क्या डिफरेंशिएट है, मतलब कैसे, मतलब जैसे वो होता है ना कि फॉलोइंग जस्ट इन लेटर्स, कि भाई दिखाने के लिए कर रहे हैं, और स्पिरिट में कोई मतलब नहीं, बस अपना ऊपर ऊपर चल रहा है काम। तो वो चीजें कैसे, मतलब कोई ट्रेस करता है इन चीजों को कि यार वेदर कोई पर्सन ठीक से कंप्लाई कर रहा है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन भी है, पहले आप इसका आंसर दो, देन उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो सेबी के पास एक सेबी सेक्यूरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया विच यू स्कूल नो, सो इसके पास ये पावर है टू इंस्पेक्ट। ओके। सो उनका रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ये इंस्पेक्ट करता है। ओके। तो ये जो एंटिटी फाइनेंस इंडस्ट्री में सारे सेबीसी के साथ रजिस्टर होना चाहिए, ना तो फिर से एनबीएफसी वगैरह देन आरबीआई के साथ। ओके। So it's all about whether you are going to follow SEBI's compliance or RBI's compliance, but both has the power to inspect their entities. ओके। So it's similar like ITO, income tax or authority जैसा ही है. Like what if a raid comes? Kind of if what if SEBI inspects ओके। and SEBI finds that these people don't do actual compliance, उनके साथ सिर्फ ये है पॉलिसीज वगैरह है, पर actual compliance तो नहीं है ये लोग, so SEBI will charge इतना and they will also debar, they can debar the entity also. So सारे powers है SEBI के साथ, so they can exercise it to any extent. And a person who is complied well enough. So any, nowadays business is more than the Indian retail individuals. Business is more about, FPAs and FIs, bringing money inside the country, which ओके। is actual business. ओके। जो ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ. So when FPs and FIs are going to invest, they don't see this guy is able to give me 100% returns and this guy is giving me 50% returns. ओके। वो ये सर्च करेगा कि ये कितना complied है, ये कितना complied है. So any disciplinary proceedings against an entity, then no FI will be happy to join them. ओके। FIs, FPs मतलब foreign portfolio investors और foreign institutional investors. ओके। So ये दोनों mostly कौन होता है, किसके पास उतना पैसा to invest in another country, वो कौन, mostly individual not. So they might be a government, country's government, Singapore government is an FPI who has invested money in India. Abu Dhabi government is an FPI who has invested राइट। money in India. राइट। And there are a few colleges, endowment funds, like या। Oxford University Endowment Fund. So kind of. So या। इतना पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर, that if you are able to hold the money as an entity or organization management, AMC, where you are going to get the business from retail individuals also. ओके। Once FPI takes money out from me, any foreign guy investors who takes money out of a stock, the stock falls and all the people exits. तो सेम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर गए, एक लेवल कंपनीज गए, फिर वहां से एक लेवल ऊपर गए, अभी वो कर रहे हैं पूरा फॉरेन मनी कैसे इंडिया के अंदर लेके आऊंगा. ओके, दैट्स ग्रेट थिंग। हाँ, सो सो कंप्लायंस सच अ सीरियस थिंग टू बी कंसिडर्ड. ओके, यू आर सेइंग लाइक कि अगर कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है कंट्री में, तो दे लुक फॉर दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली ना। सो दैट्स अ हाँ, ग्रेट पॉइंट he टू is ऐड। going to सो handle you a big amount of money, lump sum. यस। यस। फिर तो he should know that whether this guy will manage it or he'll take control. राइट, ग्रेट पॉइंट। सो अभी हम लोग ऐसा इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल कंप्लाई करने में फेलियर होता है, जैसे सपोज देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशन वी नीड टू प्रोवाइड टू आवर एम्प्लॉयर, एंड देयर आर सर्टेन ईयरली रिटर्न्स वी नीड टू फाइल। सो अगर कोई एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड he failed to comply with with certain obligations like disclose certain holdings and other things. So
Owners of those things falls on whom? Like employer or like employee? So it's up to on which point they fail. Okay. Okay, So there is this insider trading policy. right. Insider trading policy comes under insider trading regulation, which Okay, says if you are having any information about a company that a fund house is going to invest, or you are from that listed company, which you know they are going to acquire another company, उनका stock price बढ़ेगा, वो जैसा कुछ information आपके पास है, then you are considered as an insider. okay, So उस समय so insider trading policy क्या बोलती है, any ऑनलाइन और रेगुलेशन क्या बोलते हैं कि any employee who's about to take a trade, he should get permission from the compliance officer or their investment managers or investment officer. okay, So that is what regulation says. And if an employee fails on that regulation, he didn't disclose to the company that I have to trade on so and so companies XYZ. And the same time the company has also took the same trade or in a big level. okay, So, so this regulation failure doesn't affect the company anytime. Company बोलते हैं कि ये बंदा मुझको डिस्क्लोज ही नहीं किया. So it will be okay, an individual failure. okay, And there are few things which ये बंदा is obligated to do for the company, like taxing or NAV देना है investors को. Net asset value बोलते हैं. So as an we are supposed to give net asset value to the investors. As mutual funds में every day it is visible in your right. broker app. What is your net asset value today per unit and how much you will get if you dissolve it today. So that we are supposed to discuss with investors in according to the product and the period. Every product has its own periodic disclosure. So in that case, if an employee from operations fails to do it on time, then the organization suffers. Okay, Then it is non-compliance from the organization. Because okay. if he is not able to do in time, it's on me as an organization. I should Take responsibility for appoint that. some other Right. person to complete the work on time. I can't say this guy didn't give me, so I am not able to provide to my investor. Okay. Investors provided me paisa only trusting on the company name and not on the person, Employee right? name. Yeah. Employee. राइट. सो यू आर सेइंग कि इफ मतलब जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं. सो अगर एज अ एम्प्लॉय और कोई प्रोफेशनल वो फेल होता है कंप्लाई करने से, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आता है. एंड दे नीड एंड द फर्म नीड टू रिपोर्ट टू सेबी एज वेल, बिकॉज दैट दिस पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशन एंड ही हैज इनिशिएटेड दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स ना. सो जो भी Come the हम day if company comes to know, if कम the entity comes to know. सो अगर कंपनी को पता चलता है तो कंपनी को रिपोर्ट करना है सेबी को. ये उनका Compulsory. रिक्वायरमेंट है या फिर ऑप्शनल है? And this is how you are obligated with SEBI. ओके. सो So if you are the regulation nahi hai ki if after you know you should say. The regulation says before any trade you should get it from in hand. राइट, राइट, But if you are failing in that point, then regulation will not explain in failure case one what you can do, case two what you can do. Regulation says this you need to do. I have राइट. failed, but now I have understood, I have identified. Then I can report to the regulators stating as a responsible entity because I am having public money in hand. ओके, ओके, यू आर सेइंग गॉट द पॉइंट. ओके. Uh, सो यू आर सेइंग कि अगर कोई पर्सन फेल हो गया कंप्लाई करने में पॉलिसीज से, और द फर्म गेट्स टू नो दैट दिस पर्सन हैजंट कंप्लाइड विद दिस पॉलिसी, सो एज द रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन दे विल रिपोर्ट टू सेबी दैट दिस पर्सन didn't take permission for these kind of trades and मतलब other things. only when it is, only when it is in that scale, volume. If that Okay, employee is taking trade for 5,000, 10,000, and 50,000 ho gaya, and he has breached my policy will say, my organization policy will say, you should terminate the employee, then I terminate. Then I okay, don't want to report anyone. Anytime okay, SEBI asks me, I can say this is the what's happened and this is the action I have to. okay, okay, great, So got it. I can't disturb SEBI all the time like this ये बंदा ने नहीं किया वैसे. पर Right. but if any volume is big, where if I find that Substantial. SEBI will abstain me, sure, I should go and report to SEBI stating that so and so has happened, and this guy has got this. ओके. सो जैसे अभी हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे गाइस, तो वो ये था कि लाइक कोई पर्सन एज, क्योंकि जब हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे रेगुलेशन हमको फॉलो करने हैं. अपने हमारी फर्म्स की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनसे हमें कंप्लाई करना है. अगर हम लोग एज एन एम्प्लॉय फेल करते हैं उन चीजों से कंप्लाई करने में, और फर्म के नोटिस में आता है, तो फर्म स्ट्रिक्ट और सीवियर एक्शंस लेती हैं, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन बचानी है. प्लस रेगुलेटर रेगुलेटर भी है उनके पीछे ना. तो दे नीड टू सेव देयर फेसेस एज वेल. सो उन वो दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. सो अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो,
So be most authentic and honest in all the disclaimers, um, all the reportings and all whatever needs to be done. You need to do very seriously. Do not take these things lightly. These are very important tasks. Na? So one, my next question is: can you give us an example? Can you share few cases of mistakes that finance professional make in the industry and that can ruin their career? Like, okay, if someone is working in the industry and if that person is doing these kind of thing, certainly it is going to impact his career, his or her career. So can you give some example? Two, three examples will be sufficient. Yeah, So, it's, yeah. if ruining the career means it is something which is having a good scale of crime, mistake. No mistake नहीं हुआ. Any mistake ruins the career. फिर वो mistake नहीं है. It is more than that. It is a crime, Okay, right? okay. Yeah, got the point. It's not a mistake, it's a Hmm. crime. So employees should be aware that whatever they are working on, like sharing of investor data to some distributor or any other person. So these things break the company's business ethics, my ethics towards my investor. As an organization, I have few ethical obligation with my investor. If his data is leaked at my back end, then that is reputing my career, going to affect my reputation, yes, but it will not give a trustable feeling on that employee because this industry is very niche industry and very small industry. Right. Where any employee is terminated, it's immediately notified outside that so and so company से एक बंदे को terminate किए for so and so reason. Okay. So वो बोलते हैं to their employees no one should do this. So उस समय कोई वैसे रोल का आ रहा है from the same organization, do you think they will take it? So that's how ruining career is in the industry. Industry it's a very small industry, very known faces. So कोई इसमें एक कोई ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों ने मतलब टाइमली डिस्क्लोजर नहीं किए, या फिर मतलब लोगों के एज एन इंडिविजुअल पार्ट की वजह से उनको सेटबैक्स फेस करने पड़ गए रेगुलेटरी फ्रंट पे, जैसे नहीं कुछ वो लोग। तो हुआ ना. तो हुआ ओके, ना अभी जिस क्वांट म्यूचुअल फंड का फिल्टर नहीं किए इन लोगों ने. ओके, तो पोस्ट दैट देयर म्यूचुअल फंड का थोड़ा ज्यादा पैसा ये हैज बीन ड्रॉप. ओके, अभी अभी चल रहा है अच्छा ठीक. दे आर एबल टू गिव गुड रिटर्न्स कंसिस्टेंटली. ओके, बट बट दिस दिस मिस्टेक आर हैपनिंग इन हायर लेवल. ओके, सो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय जो करता है वो ठीक नहीं कर रहा है काम. तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अ गुड रेपुटेशन. ओके, गॉट द पॉइंट। सो जैसे अगर कोई जैसे आप जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जो शायद इंडस्ट्री में ज्वाइन करने वाले होंगे। सो क्या क्या कुछ कुछ ऐसा कुछ उनको हम गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको फाइनेंस करियर में थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए अपना बिहेवियर, लाइक जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स देन यू शुड बी अवेयर, लाइक आपको सारे रिपोर्ट करने पड़ेंगे इंडस्ट्री में जाके। मतलब एज फार एज आई नो दैट whenever you are working in the industry you need to provide all the details of your broking accounts, मतलब everything ना। सो थोड़ा सा किस तरीके से इन चीजों को मैनेज रखें पहले से, जिससे आपको बाद में चैलेंज ना आए। तो थोड़ा सा कुछ आप इस पे डिस्क्राइब, मतलब थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं तो हम। Okay. या, So it is disclosure is the only compliance which an employee can do. And the company जो compliance कर रहा है वो भी through the authority will disclose only. हम ये किए, ये करा, ये करेंगे. So disclosure is the main thing which an employee can do. And if an employee has an account from XYZ broker and ABC से वो trades ले रहा है रोज and is not disclosing it, it's a part of his mistake. So he should disclose that this also is my account, so is my mom's account who's in a different parent, or so and so is my wife's account. And so पहले ही ये पूरा डिस्कस करना चाहिए. So ओके, if employee thinks that they are smart enough that they say first day I don't have any demat account, फिर ऑफिस में देख रहे हैं they are trading in their मम्मी's account और पापा's account. तो ये गलत है. ये जो ओके, ये जो कर रहे हैं, तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू डिस्क्लोजर, तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी वेरी क्लियर. व्हेन सेबी क्वेश्चंस मी, वी विल सिंपली से ये तो हमको ये यही डिस्क्लोज किया, ये अकाउंट हमको पता ही नहीं है. ओके, तो उसके बाद वो एम्प्लॉय और सेबी का वो है. राइट, सो
Employees Right. should be Got the careful point. and follow their policies, whatever is instructed on the day one of onboarding. Got the So point. follow that. सो फाइनेंस इंडस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा अभी कहीं ना कहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। हर चीज को ट्रेस किया जा सकता है, एक एक पॉइंट से ट्रेस किया जा सकता है। तो अगर कोई भी आप डॉज करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज को छुपाने, कंसील करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मतलब आप थोड़े पीरियड के लिए कर लोगे, बट लंबे समय तक अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो इट वोंट बी हेल्पफुल। सो इट इज बेटर कि आप प्रॉपर कंप्लाइंट रहो अपनी फर्म की पॉलिसी से, और अच्छी यार ईमानदारी से काम करके बहुत अच्छी जिंदगी है, क्यों इतना टेंशन लेने का ना। सो वही, ग्रेट पॉइंट वो भी या वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट ही है. राइट If you're staying good, that is very good investment than राइट investing in some stock which is not disclosing to the organization. राइट राइट ग्रेट पॉइंट। मतलब सिंपली यार क्लीन रहने का है सब। कोई छोटी छोटी चीजों के बीच जाके अपना करियर पे ऐसा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं करने का ना। और जैसे मैंने एक मतलब मैं जनरली जब काफी लोगों से बात करते हैं, अभी जैसे अपनी हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, एंड देन लाइक कुछ लोगों में मतलब ऐसा नोटिस किया है कि लाइक पीपल आर लाइक टेकिंग एक्सपीरियंसेस टू शो, बस दिखाने के लिए कुछ कहीं पे काम कर लिया टाइम पास। मतलब वो सब चीजें भी एक तरीके से नॉन कंप्लायंस है कि आप यू आर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन, एंड दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। मतलब जब भी आप कोई फर्म ज्वाइन करते हो ना, सो हाँ अभी इस फ्रंट पे आते हैं हम। वेन एवर एन एम्प्लॉय इज ज्वाइनिंग अ फर्म, सो व्हाट चेक्स एंड balances कंपनीज डू एट देयर लेवल टू सी दैट ये बंदे का क्लीन बैकग्राउंड है और ठीक बंदा है या नहीं है। जैसे सपोज एक पर्सन एक कंपनी में काम कर रहा है, अब वो दूसरी फर्म को ज्वाइन करेगा, तो फर्म्स क्या क्या चीजें चेक करती हैं पास्ट की, जिससे आप लोग को थोड़ा सा क्लीन मतलब ठीक रहे। तो क्या क्या So, करते हैं मतलब कंपनीज? so पहले चेक जो करेंगे हम is, they we will check the salary bank account statement. ओके So 3 महीने का मांगेंगे, तीन ओके महीने का देगा वो. 3 महीने का will confirm whether this guy in the interview the salary said and this is right. ओके वो तो मैच होना चाहिए, उसके ऊपर ही वो मांगा हमसे ग्रेट 40%, 30%, 50%, जो भी. ओके तो we will confirm on that first. ओके Whether, so that will give us a good judgment if bank account में गलत है. So we'll check the certificates, degree certificates, whatever he completed, and जो सर्टिफिकेट सेबी का एनआईएसएम सर्टिफिकेट्स है फाइनेंस इंडस्ट्री में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का सर्टिफिकेट्स है. सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री यू नीड टू कंप्लीट दो सर्टिफिकेट्स. लाइक ब्रोकिंग में तो ब्रोकिंग का सर्टिफिकेशन करना है, एएफ में तो एएफ का सर्टिफिकेशन करना है. So that will check about whether if his role requires a certificate and whether he has completed his period. And his documents, whatever we get from him, this is one part. We'll verify. And part two, few entities even they engage, so part two is background verification from the previous company, प्रीवियस एम्प्लॉयर which या everyone does. Which everyone does. Previous employer से बात करेंगे उनका जैसे, लाइक बंदा कैसा सही रिकॉर्ड है क्या उनका, वगैरह पूरा. And the third is EPFO cross verification करेंगे. ओके So you join some big organization and you run away. And यहाँ EPFO में हम आपका डेटा डालेंगे, हमको आ जाएगा वो यहाँ से डेटा इनकम्प्लीट है. They wouldn't have written anything. This guy has left bicep page. ओके They सो wouldn't have written that this guy has left properly. They would have ओके made it incomplete. ओके So, so गॉट द वो पॉइंट। क्लोज करके आना पड़ेगा. दे आर और मल्टीपल चेक्स एंड EPFO, बैलेंसेस या EPFO. Fourth is few entities also goes with the agents who will be able to check your house and your address, which address you've given for no address. ओके। सो मतलब So बहुत yes, बहुत लेवल पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं सेट। और इट इज हाँ. बेटर कि आप सही चीजें डिस्क्लोज करो, क्योंकि करियर आपका है, लाइफ आपकी है, तो ऐसा क्यों ही करना ना कुछ भी गलत करके। सो सारी चीजें प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस कम है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा यार, क्या क्या फर्क पड़ रहा है 5-6 महीने और, लाइफ थोड़ी ना 5-6 महीने से बदल जाती है। तो प्रॉपर चीजें डिस्क्लोज करना इज वेरी गुड। ठीक है, सुबह ये समझ में आया। अभी कोई बंदा कंप्लाइंस में काम कर रहा है, सो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ही कैन रीच? मतलब कंप्लाइंस का एक करियर ट्रेजेक्टरी क्या रहता है लोगों के लिए, थोड़ा सा मतलब बताओगे? बेसिक So, जो अंडरस्टैंडिंग आपको है career. वो बता, नॉर्मल। So career trajectory is all upon the individual, I say. ओके जो बंदा ऑपरेशंस पे काम कर रहा है वो भी पहुंच जाएगा वीपी, सीनियर वीपी, सीईओ भी, अकॉर्डिंग ओके टू द इंडिविजुअल्स, ओके। एज अ स्किल्स. कंप्लायंस गाय जो कंप्लायंस में काम कर रहा है हाँ, उसके लिए क्या? आई एम कमिंग, आई एम या कमिंग. सॉरी सर।
Uh-huh. So compliance guy ka actually speaking, compliance officer is a good role to hold on. Okay. And the compliance officer के बाद organization level पे you will be growing from senior manager से VP CEO. तो सीईओ तक तो पहुंच जा सकते हो दम है तो। ओके, दम है तो जा सकते हैं। ओके, जनरली कंप्लाइंस में हाईएस्ट पोजीशन होती है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर ना? चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर से होता है, ओके। but in fact few people are can also reach to director level or ओके। सीईओ levels. ओके, मतलब उसके लाइक बाद। फाइनेंस में सीएफओ तक जा सकते हो आप, कंप्लायंस में सीईओ तक तो जा सकते हो आप। ओके। वो बोल रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट, गॉट द पॉइंट। सो सुबह ठीक है, बहुत अभी सीरियस स्टफ हो गया। ऑफिस के बाद टाइम पास कैसे होता है, क्या करते हैं? क्या ऑफिस, करते व्हाट हैं? इज द टाइम पास आफ्टर ऑफिस? हाउ यू binge watching Netflix, Prime, what do you do after office hours, just for fun, पोस्ट or party with friends? सो पोस्ट ऑफिसर्स तो अभी उतना टाइम भी नहीं है एक्सेस। Okay, एंड करंटली आई एम इन अ ग्रोइंग फेज, करंटली थोड़ा सा डिग्रीज का प्रिपेयर कर रहा हूँ पैरेलली। okay, okay, great यार। टाइम पास कम्स ऑन सैटरडे संडेज वेयर कुछ तो बिंज वॉच कर सकते हैं हम भाई। Okay, so ठीक है, what three things you learned working in the industry, as you are working in the industry for last few years, so what you have learned, tell me three things that will benefit everyone, कि ठीक है ये मैंने सीखा, if you learn this it is going to impact your career, at least help you reach 2x 3x. हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। Hard work has no substitute. Okay. नो Why? सब्स्टिट्यूट। Okay. एंड नंबर टू, when there's an opportunity, you make use of it. Strike the rod when it's hot. Again, when there is. Strike the rod when it is hot. When there's an opportunity, Okay. make use of it. So मैंने देखा मेरे टीम पे ना, कुछ बीच में कुछ टेक्निकल का बंदा नहीं था, वैसे कुछ था, उससे लॉन्ग लीव पे गया। तो मैं सोचा why don't we do the operations? So I applied for MBA पहले, started learning things technically, क्या क्या करना है ना, कैसे निकलना है वगैरह। तो वो चीज अच्छा है। Okay. Great. So ये point So मुझे when the मजेदार लगा। opportunity is there, make Great. use of. Yeah. Great point, yeah. And third one is, what is the third one? Third Third one, point. contacts are everything. What? Contacts are everything. Okay. Yeah, whoever trusts on you, help them. And whoever is there, you can bring more people into the industry. Industry is more enough to accommodate everyone. So try bringing your friends, family, whoever wants to get into the industry. Try bringing them Okay. Help today, others. or not today, tomorrow, any day. They will help you. So Right. you start helping others, be bold with your contacts. If you came out of one industry, then don't leave the entire people out. Yet Right. many times they call you, hey ये कैसे किया आपने, बताओ ये चीज ऐसे किया मैंने. So that's what I would think, like three Okay. things Okay. which I'll is helping me summarize. to. Yeah. I'll Yeah. summarize. सुबह ने फर्स्ट बोला, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। सेकंड इज लाइक कि जब अपॉर्चुनिटी आए ना, तो भाई ले लेने का है। और एक पॉइंट, मतलब मैं हिडन पॉइंट बताऊंगा जो उसने बोला सेकंड में से, इज लाइक कि डोंट बी रिजिड, लाइक कि मैं कंप्लाइंस का हूं तो मैं इसके बाहर कुछ करूंगा नहीं। यार, बी ओपन टू थिंग्स, क्योंकि पूरा स्काई है, फाइनेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट से काम करोगे, सो ग्रोथ आपको ऐसे नॉक करके बुलाएगी, कम कम ज्वाइन मी द पार्टी। एंड थर्ड वन इज हेल्प अदर्स, लाइक इफ, मतलब इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, सबके लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर हेल्पिंग समवन एल्स, मतलब देयर वोंट बी प्लेस फॉर यू, ऐसा नहीं है, देयर इज सो मच स्पेस फॉर एवरीवन। क्योंकि फाइनेंस, अभी हम इंडिया में अभी बहुत माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल आर लाइक पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, एंड दी द बेस इज ग्रोइंग। सो आप जितने लोगों को मतलब हेल्प करते हो, किसी के करियर में हेल्प करो, तो द हेल्प विल, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो आपके लिए बढ़िया ही है यार, कुछ लॉस नहीं है। मतलब सुबह ग्रेट पॉइंट्स, ऑल ग्रेट पॉइंट्स। Adding on to the second point, यस। when I joined Abacus, पहले I started with onboarding team. ओके। तो पीपल बोलते हैं कि ऑनबोर्डिंग तो तेरे पास दो डिग्री है और तो ऑनबोर्डिंग पे जाके बैठ के क्या कर रहे हो. राइट। मैं बोला जो मेरा सीनियर बोला मैं कर रहा हूँ. मेरा सीनियर ग्रेट। बोला ऑनबोर्डिंग में लोग कम है, यू कैन हेल्प देम. बोला ठीक है करूंगा. बट 30th day by the time when I came out, like I felt insecure. I went and approached the director. 30th day में it's been a month I'm in onboarding वगैरह.
But by the time when I came out, I was able to create SOP for them, standard operating procedure, how to onboard a client properly through law. So I added value there. And उसके ग्रेट पॉइंट. बाद जो onboarding में चाहिए, they are reaching out to me. I'm easy to approach. एंड वैसे ज्यादा टीम के साथ काम किया, करने का मन भी है। रिसर्च के साथ काम नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं बोलूंगा। रिसर्च बोल रहा है भाई ये कंपनी में ये डेटा का डाउट है, ये डेटा ले सकते हो, ऐसे कुछ आई ट्राई माई बेस्ट वॉट एवर आई नो, और आई लर्न फ्रॉम देम हाउ टू टेक इट, फाइंड द मैप एंड या। ग्रेट पॉइंट सुबह, मतलब बहुत अच्छी बात की यार. लाइक जहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हो आप वहाँ करो, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. और एक पॉइंट आप बोला जो मेरा सीनियर बोलेगा मैं करेगा, लाइक कि हाँ, लाइक फॉलोइंग द मेंटोर्स, लाइक मतलब लाइक मेंटी माइंडसेट. लाइक आप लोगों, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो अपने सीनियर्स को एज अ मेंटोर ले रहे हो आप, तो वो बहुत करियर को चेंज कर देता है. मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बात में मैं बोलूंगा कि वी शेयर द कॉमन वैल्यूज इन दैट फ्रंट. लाइक कि taking our senior as our mentors, and if you are taking them as mentors, they will take you as their mentees as well. So बहुत 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 पावरफुल चीज है. अगर आप इस वीडियो से ये भी सीख जाओगे ना, तो मैं मतलब मैं इतना, क्योंकि मैंने खुद फील किया, आई कैन एश्योर दैट ये आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है. सो ग्रेट पॉइंट सुबह, मतलब वेरी पावरफुल पॉइंट्स यू हैव शेयर्ड. सो ओके सर, चलो ठीक है. अभी मेरा सारा मतलब जो क्वेश्चन थे वो मेरे बेसिक हो गए. अभी कुछ मैं थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट्स पूछने वाला हूँ. लाइक भाई कॉर्पोरेट को कैसे टैकल करना है, ये जो कंपनी में ऊपर नीचे, मतलब क्या बोल, मतलब एग्जैक्ट वर्ड आई एम मिसिंग, लाइक कि क्योंकि मैं इतना कॉर्पोरेट में ज्यादा हूँ नहीं. कॉर्पोरेट को कैसे, कॉर्पोरेट की जो लोगों की क्या बोलते हैं यार सुबह, एक वर्ड आई एम मिसिंग यार. देयर इज अ हाउ टू वर्ड. मैनेज, नो नो नो. मैनेज नो नो, कॉर्पोरेट में यार. यार चलो छोड़ो, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पूछता हूँ. मतलब कॉर्पोरेट में इतने सारे लोगों को मैनेज करना, सबसे रिलेशन बना के रखना, सो वो कैसे चलता है, वो बताओ अभी थोड़ा सा. कॉर्पोरेट, यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ना, सो लोग बाहर से बैठ के देख रहे हैं कि यार मैं कॉर्पोरेट में काम करूंगा, तो कुछ कॉर्पोरेट का ज्ञान हो जाए अभी. तो कॉर्पोरेट अनदर सोसाइटी यू कैन से इनफैक्ट, you know, आपका अंदर जाने के बाद, that you will meet people who is not liking your work, or who likes your work but not you, who is fond of you and your work. You will find all levels of people. तो जो काम आप कर रहे हो उनके साथ अगस्त से सितंबर तक, they are happy with that, and when you are doing that same on February March, that is during increment cycles, ओके. so they are not happy. they become insecure, they वो सोचे कि ये मेरा प्रमोशन लेके जाएगा ये. ओके, सो तो दिस कंपटीशन, देयर इज अ लॉट ऑफ it is a कंपटीशन. heavy competition. It's a heavy competition. Like, ओके. they are insecure of someone irrespective of their department. ओके. So corporate is something, it's all about lot of individuals. So you'll find every individual there, every type of individual who wants to. And corporate is a place where everyone comes to for growth, or for wealth, prosperity, jo bhi. So corporate gives you money, but to get the money from them, these guys were like, they are very competitive, or somewhere they are agile, somewhere they are, so or no, it's a mixture. It's a mixture. It's a mixture of तो their ये, responsibilities. They need to take care of. मेरा responsibilities I need to take care of. ओके, गॉट द So पॉइंट ना. it's a सो मेरा competition. प्रमोशन कोई नहीं लेके जाना चाहिए. टेक माय प्रमोशन. So there is a fight going on for the higher promotion, higher increment, and like मेरा promotion thing. Promotions. Great. Okay. So one last question now. What one skill people should learn if they are working in the industry? जो खुद का insights है. What you got to know कि what I should learn to become more valuable in the industry. एक skill, कोई सी भी एक ऐसी skill that you advise others to learn. Gemma's Excel is something I want to learn a lot. Higher I'm level, learning. on a higher Ah, level, advanced Excel kind of thing. advanced Excel kind of. Like Okay. nowadays, the AIs are also there. Are able to help you in MS Excel in a better way. So data segregation is a big thing in the finance industry, where the organization you go, you develop bigger organization you go, so you will have bigger data in hand. इसको आप Okay. संभालना है, Okay. और आप उसको मेंटेन करके you should work on it further. Okay. तो वो चीज So में MS Excel is a very great thing, and which mostly people ignore to learn.
पर वो चीज लर्न करना ही है। आप जो आप कॉम्प्लायंस हो, लीगल हो, जो भी हो, एमएस एक्सेल तो यू शुड नो। एडवांस्ड एक्सेल, यू आर सेइंग कि अगर आपको यस, एडवांस्ड एक्सेल आता है तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हो। इट शुड बी, मतलब आपको आना ही चाहिए अच्छे से, ऑप्शनल नहीं है, एग्जैक्टली, आना ही चाहिए। सो आना ही ग्रेट चाहिए। ग्रेट शोभा, थैंक यू फॉर ऑल द आंसर्स। एंड मतलब आई ट्रूली एंजॉयड द पॉडकास्ट, लाइक कि क्या मतलब वी आर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों से बात करने में तो एनी टाइम मजा आता है। सो अभी ये जैसे जनरली मैं बताऊंगा कि एक आध दो पॉडकास्ट अभी लास्ट में किए ना, तो कभी कभी मैं नर्वस हो रहा था जब मेरे फ्रेंड सामने बैठे होते हैं ना, तो लगता है क्या ही है, अपना दोस्त है यार, इससे नॉर्मल बात करनी है। So there is no pressure, like and with you, like it's like general talk na, so very free. Matlab, I also enjoyed this podcast. Thank you, Subha, thank you for imparting a lot of wisdom, and I will would love to have you in our community as well. Sure, sure, sure. Okay, Subha, yeah, so we are just going to close this podcast. If you want to talk directly to our viewers, you can talk. Floor is yours. Hi Anything you want. viewers, so Princess taking this community to a different level, and he always thinks about the community, how to impart some things on them, or how to take this to the next level. And he's trying to bring in very influential people inside. And tomorrow you have a call with Manish Kanaja sir also, na? Right, right. We Who is have a a very session good. tomorrow. Yes. So he's a very good salesperson in the country on finance industry. So you can. So he's trying to bring all his contacts in one club, one community club. Yeah. So he is taking this to another level, and I appreciate him for his, prospective ideas too. Like we discussed few previously, and hopefully all gets succeed. And थैंक यू सुबह, wish थैंक you यू सो मच success. फॉर ऑल Yeah. द ग्रेट विशेस। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल, सो दैट वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जा पाए करियर में। जैसे होता है ना कहीं आप मिस कर रहे हो, आपके पास नेटवर्किंग के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके पास स्किल्स लर्न करने के लिए नहीं है, आप peers से connect नहीं कर पा रहे हो। So we are building an entire ecosystem around finance industry. So if you are someone who is working in the industry, so connect with us. We are happy to help you guys. Thank you, Sobha. Thank you so much, and we'll connect over phone. Promos Sure, sure. probably. Okay. Thank you guys. Thank you so much for Thank attending you. this session. Thank you, friends.